Hey, what's up, guys? Praful here. Welcome back and thanks for joining in. Today is 19th of October. Today is a Tuesday and the time is almost close to 7:30 in the evening. Why am I making the video right now? Because I thought that some of the points that I'm gonna say in this video would be quite important to you guys. Just to give you the brief overview of what happened. So MTM wise, I took a loss of around 12,440, which is less than 0.2% of my capital. The capital is somewhere around 63 lakhs. मैंने फिर से मतलब थोड़ा बहुत capital infuse कर रहा हूँ, धीरे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा हूँ as my confidence keeps increasing. कोई जल्दबाजी नहीं, that's why I'm taking it really slow. And I booked the loss of around 12,000 कितना 12,440, which is less than 0.2%. So absolutely no issues, because मैंने decide किया था कि 15,000 मेरा risk appetite रहेगा and I कट आउट द पोजिशन वेल विद इन माई रिस्क एपेटाइट. सो मैंने पोजिशन री एंट्री भी नहीं ली. उसके बाद 10 o'clock के आसपास मेरा ट्रेड खत्म हो गया एंड उसके बाद मैंने कुछ कोशिश भी नहीं किया री एंट्री लेने के लिए. नाउ टू टॉक अबाउट द मार्केट्स, जैसे मेरा थंबनेल बोल रहा है, इट्स नॉट अ 2-way मूव, इट्स नॉट अ 3-way मूव, इट्स अ 4-way मूव. मतलब वी गैप्ड अप एट अगेन बाय क्वाइट एन अमाउंट एज इफ गैपिंग अप इज द ओनली वे टू ओपन. फिर से मतलब 0.7-0.8% तक गैप अप हुए एंड जस्ट लाइक yesterday we saw the first 5 minute का dip and then immediately it was like the dip was completely bought by the impatient bulls and I thought that okay, the price action seemed exactly like yesterday. So instead of going for a strangle, I went for a short straddle at 18,600 and 18,550. ठीक है, तो usually I go for a strangle, but आज मेरे लगा कि I was getting somewhere around 180 points on the straddle, so that's why I thought the premiums were okayish to trade the straddle and I sat on the straddle. Now just because I'm sitting on a straddle, my exit criteria should also be very tight, क्योंकि unlike strangle, the adjustment of straddle becomes quite tricky because one option becomes in the money and when it starts to bleed, it bleeds like anything. So there's nothing much that you can do to control its bleeding unless you short in the money option by booking the winning leg. So that's why my exit criteria was also pretty tight. तो जैसे मैंने डिसाइड किया था कि जैसे ये रेजिस्टेंस है विच इज जस्ट बिलो द डे स्लो, अगर वो ब्रीच होता है तो आई विल कम आउट ऑफ द पोजीशन. अपसाइड के लिए मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज सिंस द मार्केट हैज ऑलरेडी ट्रेवल्ड बाय क्वाइट एन अमाउंट, आई वाज नॉट सो वरीड अबाउट द शॉर्ट कवरिंग. तो मेरे को लगा कि मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो ऐसे जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा, सो द स्ट्रैडल विल गिव अ प्रॉफिट. बट अगर नीचे जाएगा तो तेजी से आएगा, ये मेरे को पता था. एंड आई बीन टेलिंग दिस इन लॉट ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस कि मार्केट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई, द प्रॉफिट बुकिंग कैन कम एनी टाइम. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज आएगा कल आएगा, कभी तो आएगा. आज आया ठीक है, अगर आज नहीं आता तो कल आता, कल नहीं आता तो एक हफ्ते के बाद आता, कभी तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही आएगा. सो टिल दैट हैपेंस, लाइक माय पोजीशन साइज वुड बी लो. आज के लिए मेरा पोजीशन साइज था 2000 क्वांटिटी. तो 2000 क्वांटिटी पे दिस इज अराउंड 6 पॉइंट का लॉस. क्या मैं 200 पॉइंट्स का स्ट्रैडल पे बैठ के 6 पॉइंट का लॉस पे काटा? इज इट नॉट अ वेरी टाइट रिस्क मैनेजमेंट? आप पूछ सकते हैं. नहीं, बिकॉज before I hit the minus 12,000 mark, I was at a plus 8,000 mark, which is plus 4 points. So plus 4 points and minus 6 points, that is, I almost gave up 10 points to the market. 10 points to the market, that was my risk appetite and also my exit criteria was met. ये जो level था, ये breach हो गया and the way it was breaching, the way the markets were falling, it was like pretty ferocious. So that's why I decided ठीक है, कट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा लॉस लेना पड़ेगा, लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं. एंड उसके बाद मैंने कोशिश भी नहीं की टू री एंटर. एंड लुक एट दिस, यहां पे आफ्टर ओपनिंग 80-90 पॉइंट्स गैप, आई मीन आफ्टर ओपनिंग 0.8% गैप अप फ्रॉम द टॉप ऑलमोस्ट 18,600 से लेके 18,400 तक, राइट, 18,400 तक ऑलमोस्ट अ 200 पॉइंट फॉल, 200 पॉइंट का फॉल इन द स्पैन ऑफ 10 मिनट्स. उसके बाद within next 10 minutes 120 points ka recovery, and after that the market took a breather and it kind of consolidated and moved higher slow and steadily, where the option premiums lost again a lot of value. So people thought that okay bhai, ab to matlab pura dar khatam ho gaya, and again people started shorting. And just when it looked like it's gonna slow and steadily head higher or end somewhere here, the selling again resumed afternoon. तो आफ्टरनून फिर से सेलिंग रिज्यूम हुआ एंड दिस टाइम द सेलिंग वाज अगेन
a very rapid sharp selling, and this time the market fell almost 220 points. It made a low of almost 18,380. This is a four-way move, correct? पहले 0.8% का gap up which would have thrown out a lot of positional option sellers. उसके बाद 200 पॉइंट का फॉल, उसके बाद 200 पॉइंट का रिकवरी, उसके बाद 220 पॉइंट का फॉल. So this market is kind of a nightmare of option sellers, because like no matter what you sold, probably you would have either hit a stop loss or probably cost to cost cut karna padega, and only if you're lucky or you're God probably would have made profits here. And option buyers ke liye, of course, like ye base low breach hote hi, like you would have made like good profits. That's not the thing. But the thing is, like, this kind of market is very hard to trade, considering the fact that at 17 wicks the premiums are not at all attractive. So the short straddle is actually factoring in only 1% of the margin on either side. So both Nifty and Bank Nifty I'm talking about. And I think that this is the kind of markets which is trying to kick out, which is trying to throw away the weak option sellers, like who come into the markets looking at the strategies on YouTube. मतलब YouTube पे stock mock पे थोड़ा बहुत back test करके ये मतलब पिछले ज़माने में काम किया था, अभी भी काम करेगा करके जो लोग आ जाते हैं, तो उनको बाहर फेंकने के लिए ये मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा है. एंड आई मीन इट्स नेचुरल, ठीक है. व्हेन a lot of people start doing something which they believe that it's free money, basically markets would definitely prove them wrong sooner than one could imagine. So that's what is happening. And the surprising thing is, a lot of these stocks, like, which were doing really well over the last few trading sessions, example ITC, which was like trading, which was like shooting up like anything. So today it corrected 6.5%. It's not correction, it's kind of a mad profit booking. And similarly, Tata Motors, which has been trading at 15-20% every trading session, so today it fell almost 5.5%. एंड उसके बाद IRCTC तो ऐसे भाग रहा था कि मतलब आसमान भी मतलब कम पड़ जाए. तो दैट इट करेक्टेड ऑलमोस्ट 15% फ्रॉम द डेज हाई. मतलब इट वाज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 6,400 एंड 15-20-25 मिनट में 500 के नीचे आ गया. इट्स नाउ ट्रेडिंग एट 4,990 समथिंग. तो दैट इज द काइंड ऑफ IRCTC. तो प्रोबेबली कल भी मतलब एक गैप डाउन खुल सकता है. आई डोंट नो, लाइक वी हैव टू वेट एंड वॉच. बट दिस वाज सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दैट वी सॉ इन द मार्केट्स. एंड सो दैट्स अबाउट इट. आई टुक अ लॉस ऑफ 12,000. एंड आपका क्या हुआ है कमेंट्स में बताओ. एंड कोई बात नहीं, ठीक है. अगर आपने लॉस लिया है ना, आप इमीडिएटली बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उससे ना आपको वो जो एम्बैरेसमेंट फीलिंग होती है वो दूर हो जाएगा. सो दिस इज अ टेक्निक. अगर आपको लॉस होता है तो आप कमेंट करो, आपका फ्रेंड्स को बताओ, आपके घर वालों को बताओ कि मैंने आज लॉस किया. सो यूड बी बेरेफ्ट ऑफ दैट एम्बैरेसमेंट. लाइक you'd put that embarrassment away and you'd start accepting the losses in a graceful way. So that way your trading would improve significantly. तो यकीन मानिए. तो अगर आपका लॉस हुआ है तो कमेंट्स में बताइए. एंड एट द सेम टाइम, थैंक्स फॉर द यस्टरडेज लाइव सेशन. काफी अच्छा गया एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, क्योंकि ऑन अ ट्रेडिंग डे पीपल स्पेंट 3 hours, मतलब कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से एंड तक ऑलमोस्ट 2,000 लोग कंटिन्यूसली पूरा देखे. 3 hours का लंबा सेशन था. ऐसे मतलब 10-15 मिनट का वीडियो नहीं था, 3 hours का सेशन था. एंड वी गॉट a lot of questions. Super chats aa rahe the and lot of questions were coming in, and I think like we couldn't even answer like 30% of the questions that we got. So that was the kind of engagement that we had. So it was a huge success and we definitely look forward to doing such sessions in the future. And अगर आप देखे नहीं हैं तो ऑप्शनेबल्स चैनल पे अभी भी वो वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं. probably it's a 3-hour वीडियो. टाइम निकाल के देख लेना. काफी अच्छा फीडबैक आया है. एंड या दैट्स अबाउट इट. कल वेंसडे है तो कल थोड़ा बहुत टीटाडी के रहेगा, बट वेंसडेज हैवंट बीन रियली काइंड टू मी. सो टुमारो आई विल बी अप्रोचिंग द वेंसडेज विद अ बिट ऑफ कॉशन. देखेंगे क्या होता है. सो सिंस वी हैव ह्यूज 220-230 पॉइंट का रेंज, so it's gonna be interesting tomorrow, like how the market opens and where we gonna head. So that's about it. And chalo guys, like I'll see you guys tomorrow for another session. Bye bye.